Welcome, children. Today we start with uh, Social Studies 13th chapter. Now we have already done the first chapter related to history, 8th chapter related to civics, and the 13th chapter over here deals with geography. And your 13th chapter will deal with India's location, its geological structure, and physiography. So this is first part of your chapter 13, and the second part will continue in the 14th chapter. So first one, your introductory paragraph, that India holds a very unique position, very important position on the world map among all the countries. Reason, first, India enjoys maximum voters in the world, that is, it has largest democracy. Second, its culture is one of the oldest compared to other countries. Now, India is the largest democracy in the world, and our important feature, that is India's important characteristics, is that we have always considered all people as one. We follow secularism. So the coordinating behavior or attitude of our culture has not removed, that is, we have not discarded any religion, race, or people, but we have accepted all of them as one with our wholeheartedly. Thus, partiality has never been our feature, but impartiality we have always shown towards all religion, caste, color, race, people, and this is an important feature of our country. That is why India has become a cultural merger, that is, different culture people or different religion following people stay under one roof of India. So it is said that India has become a cultural confluence. So your first paragraph is your 2-marker answer, and the question will be why India has become a cultural confluence. Now next, even though we have seen that India has faced since this many centuries many natural and man created disasters, that is destruction, yet India has continuously made her progress. Geographical conditions have greatly supported India in its development and progress. Now, which are these geographical conditions due to which India has progressed in this long many years? So, in short, these geographical conditions are, you can say, ever flowing rivers from Himalayas, overflowing rivers, fertile bank of the rivers, which has made the land very fertile, and which has helped us in developing our agricultural field. Then there are plateaus which has given us many minerals and supportive for the development of our industries. Then we have peninsular India, that is our southern India, 3 sides surrounded by water, which has made our international transportation very easy. Communication with the world has become easy due to it. So there are a lot many geographical factors which has helped India in progressing. Now here you can see some natural disasters like earthquake and the dry land, and the man-made disasters like the rail accident and the fire in the industry, or there may be sometime gas leakage in the industry which leads to the destruction of environment and human being. Now the next you will see over here is the globe, and related to this video will be sent to you in a day or two, which will in detail tell you about how the world which was, or the planet Earth which was a single land mass, was divided into 7 continents, which you can see over here, and it's like a puzzle game. Just imagine this map in front of you as a puzzle. Now slowly imagine करते हुए सारे कॉन्टिनेंट्स को एक दूसरे के नज़दीक सेंटर में ले आओ, and you will see that each continent fits
exactly in the other continent. So this also is one of the factor that proves that India was, which is on the southern part of Asia, you can easily see, gets easily फिट हो जा रहा है. फिर उस पार्ट को, ग्रीन पार्ट एशिया के ले आओ अफ्रीका की तरफ, ब्रिंग यूरोप अ बिट टूवर्ड्स अफ्रीका के नॉर्थ में. उसी तरह से सारे 7 कॉन्टिनेंट को एक दूसरे के बहुत नज़दीक ले आओ. और ये प्रूव करता है कि लैंड पहले एक सिंगल था, सिंगल लैंड मास. अर्थ वॉज अ सिंगल लैंड मास, बट अब वो दूर जा रही है सारे कॉन्टिनेंट एक दूसरे से ड्यू टू द टेक्टोनिक मूवमेंट्स अंडर द अर्थ क्रस्ट. नाउ द नेक्स्ट स्लाइड tells you about India's location on the world map, its size and area. ज़्यादा क्लैरिटी आएगी द नेक्स्ट फॉलोइंग स्लाइड्स में, विच पार्ट बाय पार्ट दो स्लाइड विल शो यू why India is said to be located in northern hemisphere also and eastern hemisphere also. But before that, this paragraph over here, where geographically it is said that India lies in the northern hemisphere. That is, वर्ल्ड मैप पे अगर हम देखते हैं तो इंडिया नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में लोकेटेड है. इट एक्सटेंड्स अप टू द सर्दर्न पार्ट ऑफ एशियन कॉन्टिनेंट. अब ये तो पता ही है कि इंडिया की लोकेशन कहाँ पे है, तो एशियन कॉन्टिनेंट के साउथ में. नाउ द स्पैन और द लैंड एरिया ऑफ इंडिया, it extends from 8 degree 4 minutes, it is said, to 37 degree 6 minutes north latitude. Now latitude we will always consider as horizontal imaginary lines on the globe, and longitude means vertical your imaginary lines on the world map. अब अगर imaginary lines draw हम कर लेते हैं horizontally, तो इंडिया कहाँ पे फॉल हो रहा है, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर. और अगर हम वर्टिकल लाइंस ड्रॉ कर रहे हैं, दैट इज लॉन्जिट्यूड, तो इंडिया आ जाएगा वर्ल्ड मैप के ईस्टर्न पार्ट में. तो 68 डिग्री 7 मिनट्स टू 97 डिग्री 25 मिनट्स ईस्ट लॉन्जिट्यूड में वो लोकेटेड है. अब ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, यू एवरीवन नो that it is exactly located at 23 degree 5 minutes north latitude, and it divides the country into 2 parts. This shows that Tropic of Cancer passes exactly through the mid of India, through the center of India. Its northern part is spread more in the east-west direction. मतलब अगर Tropic of Cancer को हम यहाँ पे next part में तुम देख लोगे, next pic में that follows, तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के नॉर्थ का पार्ट थोड़ा ब्रॉड है. ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के सर्दर्न पार्ट को अगर हम देखते हैं तो इट इज़ इन अ ट्राइंगुलर शेप, इट इज़ नैरो टूवर्ड्स द साउथ. और नॉर्थ में है हिमालयन रेंज, साउथ वी हैव 3 साइड कवर्ड विथ वाटर. तो द लार्ज प्लेन्स यू विल सी एंड हिमालयन माउंटेन आर लोकेटेड इन नॉर्थ. The area to the south of Tropic of Cancer, as I told you, is triangular. Tapers, means becomes narrow as you go towards the south. This is basically a part of Peninsula Plateau. It includes the eastern plain, that is east coast, and narrow west coast. Now let's see about the north and east hemisphere, how India is said to be located in these 2 hemispheres. Here you see the first one, where you see that India is located towards north on the globe. अब सेकेंड पिक देख लो. सेकेंड पिक में तुम्हें 2 शेड दिखाई देंगे कलर्स के. वन इज लाइट ब्लू, द अदर इज डार्क वन. अब जो अपर पार्ट है लाइट ब्लू, दैट इज नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, तो वहाँ पे लोकेटेड है इंडिया. सो दिस फर्स्ट एंड सेकेंड पिक क्लियरली शोज यू how India is said to be located in northern hemisphere. As we move to the next slide, अब यहाँ पे देख लो southern hemisphere, नीचे का सेक्शन जो दिखाया गया है वहाँ पे इंडिया नहीं है. मतलब ये हुआ कि अगर हम लैटिट्यूड, मतलब कि हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर रहे हैं
और ग्लोब को हम दो हेमिस्फीयर में डिवाइड कर रहे हैं, नॉर्थ एंड साउथ, तो इंडिया है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में. नाउ कम टू द नेक्स्ट स्लाइड. यहाँ पे अब वर्टिकली वर्ल्ड मैप को डिवाइड कर लो तो हो गया ईस्ट और वेस्ट हेमिस्फीयर. तो अब इंडिया कौन से हेमिस्फीयर में लोकेटेड है? दैट इज इन ईस्टर्न हेमिस्फीयर. सो व्हेन वी रोटेट द ग्लोब we see the part shown on the left hand side pic. Now divide it vertically into two part. तो बन गया एक वेस्ट हेमिस्फीयर, एक ईस्ट हेमिस्फीयर, और इंडिया lies in eastern hemisphere. And the next part is, you can again clearly see over here how the Tropic of Cancer, that white line shown, imaginary line exactly it is, but to show you, here it is, the Tropic of Cancer moves exactly from the mid of India. And the next slide, as I told you, the horizontal lines on the globe, these are imaginary lines which shows you or tells you that they are latitudes. And the next will show you the vertical lines on the globe, and these are imaginary lines again, and they help us to locate any place on the map. So these are termed as longitude. And the right hand side pic shows you how India is located between this latitude and longitude. So this we have seen already in the previous few slides. 8 degree 4 minutes north and 37 degrees 6 minutes north, and similarly east. So see the next one. Now, here you will see the span of mainland of India extends 8 degree 4 minutes to 37 degrees 6 minutes north latitude, which we have already read. But you can see the equator over there. Now this means that India is 8 degree 4 minutes away from equator, and you can even clearly see 8 degree north and 9 degree in the other pic. Now this shows that each degree on our globe is divided into 60 minutes, which you can clearly see over there, those small lines in white drawn between 8 and 9 degree. अब 60 minutes मतलब कि अब इक्वेटर को अगर हम देखते हैं तो इक्वेटर से इंडिया कितनी दूरी पे है? दैट इज 8 डिग्री 4 minutes. And in north you can see it is 37 degree 6 minutes away from, that is from the north. तो एक हुआ from equator how it is far, 8 degree 4 minutes, and you see from the top from north it is 37 and 6 minutes. And the next, as we follow again a bit of more with clarity, you can see over here north and east, and the next second and third pic also can show you the horizontal lines in one pic, then comes the vertical over it, and their latitude and longitudinal extent. तो अगर इस बॉक्स में इंडिया को हम देखते हैं तो सब जगह से वो इक्वल है, 30 डिग्री इज़ वेरी मच इक्वल. फिर भी नॉर्थ टू साउथ जाते हैं तो डिस्टेंस बड़ा है ईस्ट टू वेस्ट की कंपैरिजन में. लाइक नॉर्थ साउथ, व्हेन यू कैलकुलेट, व्हेन यू सी द डिस्टेंस, इट इज़ लार्जर देन ईस्ट वेस्ट. और you can see again Lakshadweep Island on India's west, that is Lakshadweep, you can see over here west, that is on the left hand side. On the right hand side above you can see India के right में, that is east में है Andaman Nicobar Island. And here are some pics showing you about Tropic of Cancer exactly. जहाँ पे ये पास हो रहा है वहाँ पे उन्होंने ये कर्क रेखा कहते हैं उसे. And the latitudinal as well as longitudinal extent of India almost equal.
that is 30 degree we saw, but actually the length from Kashmir to Kanyakumari is 3214 kilometer, and from Gujarat to Arunachal it is 2933 kilometer. मतलब length is more than the width. There is a difference of 2 hours in the local time between two extreme places of our country, that is Gujarat in the west अगर हम देखते हैं टाइम, एंड गो टू द राइट और ईस्ट अरुणाचल प्रदेश. तो बिकॉज ऑफ दैट लॉन्जिट्यूडनल डिफरेंस यू विल सी, लॉन्जिट्यूडनल डिफरेंस मतलब लेंथ 3214 एंड ब्रेथ 2933. तो ये डिफरेंस की वजह से ये दोनों जगह जो एक्सट्रीम ईस्ट और वेस्ट ऑफ इंडिया के हैं उनके टाइम डिफरेंस में 2 घंटा है. मतलब इसके रिलेटेड भी वीडियो देखा जाएगा. नाउ गुजरात में अगर नहीं, जस्ट इमेजिन कि 10 बजे अभी सुबह, तो अरुणाचल प्रदेश में हम 2 घंटे वहाँ पे सनराइज़ जल्दी हो जाता है. मतलब वहाँ पे अब हो गए हैं 12 o'clock, दैट इज़ नून. और अगर हमारे यहाँ 12 नून है तो वहाँ पे वो हमसे 2 घंटे और आगे हैं. मतलब कि जब यहाँ पे रात को एक्चुअली वी कंसिडर इज एट नाइट, बट वो ऑलरेडी सुबह होती है, तो 4 बजते हैं सुबह को, तो हमारे यहाँ सनराइज़ 4 बजे नहीं होता. बट अरुणाचल प्रदेश में तब तक 6 बजे हैं, तो दे सी द सनराइज 2 hours ahead of us. तो when it is sunrise in Arunachal Pradesh, it is night time in Gujarat. And this standard meridian of India, मतलब कि जैसे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर हॉरिजॉन्टली इंडिया के बीच से जा रहा है, वैसे ये वर्टिकली मतलब लॉन्जिट्यूड वो पास हो रहा है एट 82 डिग्री 30 मिनट्स. मतलब कि ये हुआ हमारा स्टैंडर्ड टाइम, फिक्स टाइम, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम IST. क्योंकि अगर विद इन इंडिया ही टाइम डिफरेंस होगा तो इट विल बिकम वेरी डिफ़िकल्ट फॉर द people to reach to the other part of the country to pick up their or board their plane and train or do their business and all. It will make a big confusion or large confusion will be created. तो हमने 82 डिग्री 30 मिनट्स ईस्ट लॉन्जिट्यूड को लिया है हमारा IST. वहाँ से जो लाइन पास हो रही है, अब वो यू कैन टेक इट एज वो कहाँ से पास होगी, तो से अ प्लेस मिर्ज़ापुर. अब मिर्ज़ापुर में टाइम जो है वो पूरे इंडिया का फिक्स टाइम कर दिया गया है. सो इट पासिस थ्रू 5 states एंड दैट लोकल टाइम इज एक्सेप्टेड एज द स्टैंडर्ड टाइम फॉर अ कंट्री. नाउ यू विल हैव टू गो थ्रू दिस मैप, प्रैक्टिस इट on your blank map, that is just the few things, not everything, but Arabian Sea, Bay of Bengal and the Tropic of Cancer that passes through in between. Then there is you can see the width, that is from Gujarat to Arunachal or from east to west, what is the difference, and from north to south what is the distance. This much you will have to see. And one more, the standard meridian, it is written over there, which passes through, you can see over there, नेपाल के एंड पे से वो लाइन जा रही है. अब टॉप में देख लो तो वहाँ पे दिखाया जाएगा 80 डिग्री के राइट में है वो, मतलब इट इज़ 82 डिग्री वैसे लिखा गया है एंड 30 मिनट्स. तो इस तरह से जहाँ से भी वो स्टैंडर्ड मेरिडियन पास हो रहा है वो 5 स्टेट का हमने जो टाइम उस समय था वो पूरे इंडिया के लिए फिक्स टाइम है. सो एटलीस्ट अप टिल नाउ वी स्टॉप ओवर हियर बिकॉज इट विल बिकम अ बिट टू हैवी फॉर यू टू डाइजेस्ट द अदर पार्ट. तो एक अब तक यहाँ तक का 2-3 बार देख लेना, पिक्स वीडियो सुन लेना ठीक से, एंड इफ़ एट ऑल you have any doubt, give me a call to get it cleared, and keep on repeating this part, keep on seeing the globe, what are called latitude, what are longitude, what is the
Tropic of Cancer, from where does the standard meridian pass, all these things on the map and on the globe. Keep on revising so that it becomes easy for you. Thank you so much. And the second and the last part of this chapter we'll be doing in our next lecture. So